दोस्तों मेरा नाम है वैभव और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जो कि चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं जो कि चैनल आर्ट बनाते हैं मतलब एडिटिंग करते हो, जो बैनर बर्थडे बैनर ऐसा सब कुछ बनाते हो वो यूट्यूब आर्ट बना लेते हैं, पर जो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो उसे तो मतलब आर्ट अपलोड करते हो तो आर्ट आप बनाते हो साइज़ यूट्यूब लेता नहीं, जो कि बहुत छोटा चाहिए उसे। तो उस साइज़ क्या लगती है वो भी आपको बताने वाला हूँ और उस आर्ट को कैसे बनाते हैं। दोस्तों आपको आर्ट बनाने के लिए लगने वाली 3 चीज़ें जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। एक पिक्स लैब की इतनी ज़रूरत नहीं होती है पर आपको बता देता हूँ, पिक्स लैब चाहिए एक, और पिक्स आर्ट, और एक लास्ट स्टेप इरेजर। आपको इस 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों इन चीज़ों में आपको बता दूँ, पहली चीज़ पिक्स आर्ट, पिक्सल लैब में आपको बनाना है आपका चैनल का नेम या लोगो या कुछ आपको नेम क्रिएट करना है। जैसे कि आप अभी मेरे चैनल का आर्ट नहीं है, पहले था अभी नहीं है, जैसे अभी बनाऊंगा मैं वही रखने वाला हूँ, जो कि मेरा इट्स है वो टेक नाम बना सकता हूँ, या मेरे चैनल का उससे रिलेटेड है अनबॉक्सिंग अर्निंग, मतलब ऐसा टेक रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, टेक न्यूज ऐसे मैं बना सकता हूँ। और पिक्स आर्ट जो कि उसमें मैं वो साइज सब कुछ PNG कैसे लगाएगा, नाम कैसे लगाएंगे वो सब आपको बताऊंगा। वो पिक्स लैब में आप कर सकते हो, पिक्स आर्ट में कर सकते हो। और दूसरा इरेजर, जो कि आपको इरेजर इसलिए लगेगा, आपको कुछ PNG हो आपका नाम का लोगो वो इरेज करने के लिए, मतलब उसकी बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको लगेगा। और आपको इरेज से नहीं हो रहा होगा, आपसे नहीं होता होगा, तो चौथी बात आप गूगल क्रोम पे जाके BG रिमूवर नाम डाल के आप उसमें अपना इमेज अपलोड करके अपना PNG निकाल सकते हो, जो कि आप थंबनेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसे हर जगह यूज़ कर सकते हो ये बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। तो दोस्तों अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि BG रिमूवर आपको इस्तेमाल करता नहीं आता होगा, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उससे इरेज कैसे करते हैं। तो दोस्तों सब यूट्यूबर BG रिमूवर करके ज़्यादा यूज़ करते हैं और एडिट करने के लिए, जो कि पिक्स आर्ट बनाने यूट्यूब आर्ट बनाने के लिए, मतलब वो जो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे ये आर्ट बनाने के लिए ज़्यादा करके लोग पिक्सल लैब यूज़ कर। तो सब यूट्यूबर पिक्सल लैब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज भी आपको मैं आसानी से पिक्सल आर्ट सब कुछ कैसे यूज़ करें उस आसानी से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसमें 3 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब आर्ट कैसे बनाए, पिक्सल लैब पिक्सल आप में आप फॉन्ट्स या मतलब कैसे बना सकते हो अपना नेम, और थर्ड जो कि आप चैनल आर्ट बना के अपने चैनल पे कैसे लगा सकते हो। और तीसरे में 2 ऑप्शन है आपको कि मोबाइल से कैसे लगा सकते हैं और लैपटॉप से, मतलब PC से, आपका PC लैपटॉप होगा तो उस पर कैसे लगा सकते हैं। ये मैं 5-6 चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है मगर आपको बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ही नॉलेज मिल जाएगा। बहुत लोग यूट्यूब पे बनाते हैं पर आप इस वीडियो में कुछ अलग, मतलब इस वीडियो में बनाना भी और अपलोड करना कैसे लगाते हैं, क्या चेंज करना आप कैसे कर सकते हो, साइज भी सब आपको बताने वाला हूँ। और उसके लिए लगने वाली PNG सब आपको मिलेगी और मैं कहाँ पे रखी आपको सब बता दूंगा मैं। चलो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अपने मोबाइल स्क्रीन पे